Namaste. To watch this video in English, you can click on the timestamps in the description box. नमस्ते, आपका मास्टर चांद पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है अप्रैल के महीने में आपका करियर कैसे रहने वाला है, आपके लिए क्या करियर एडवाइस है। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है एमेथिस्ट, दूसरा ऑप्शन है पिंक फ्लावर, तीसरा ऑप्शन है पीकॉक का फेदर। ओके, तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है वो है एमेथिस्ट। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अप्रैल के महीने में आपके करियर में क्या चीज़ें होने वाली हैं, सक्सेस कैसा होने वाला है, या क्या एडवाइस है आपके लिए। ओके, करियर के हिसाब से अप्रैल के महीने में आपका जो पहला कार्ड है वो है डेथ कार्ड। तो डेथ कार्ड यूजुअली ये बताता है कि आपके करियर में एक बदलाव आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। डेथ करियर चेंज की भी बात करता है। मे बी आप किसी काम में हो एंड देन आप ऑलरेडी सोच रहे हो कि मुझे ये जॉब छोड़ना चाहिए एंड ये चीज़ करना चाहिए। तो समथिंग वेरी डिफरेंट, बहुत अलग, जो आप कर रहे थे पहले उससे बहुत अलग। तो उस टाइप का कार्ड है डेथ कार्ड। ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए आपके पास दूर में वहाँ पे हॉर्स है, हॉर्स के पीछे अगर देखा जाए टावर है एंड वहाँ पे सूरज उग रहा है। तो ये एक नई शुरुआत की भी बात करता है, जहाँ पे मे बी आपने चैलेंजेस देखे हैं। अप्रैल के महीने में आप स्ट्रांगली सोच रहे हो एक करियर चेंज करने के लिए। थोड़े लोगों के लिए पॉजिटिव चीज़ हो सकता है, जहाँ पे वो खुद चाहते हैं कि हाँ मुझे ये करियर छोड़ना है, क्योंकि मे बी आप अच्छे खासे पैसे नहीं कमा पा रहे हो, वो चीज़ हो सकता है। आप छोड़ना चाहते हो और आप चाहते हो एक बदलाव हो आपकी लाइफ में, एंड ये जो बदलाव है एक मेजर बदलाव है एक्चुअली। ओके, तो उस टाइप का कार्ड है डेथ कार्ड। एंड यहाँ पे टावर मूवमेंट्स हुए हैं। बेसिकली आपको स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हुए होंगे, लाइक समझना, अपने करियर के बारे में चीज़ें समझना, ये सारी चीज़ें हुई हैं। एंड फाइनली आपको लग रहा है कि आपको करियर चेंज करना चाहिए, तो वो चीज़ है विद द डेथ कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स किस टाइप का कार्ड है। तो यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ कि आपको लगता है कि आपका जो करियर है आपको अच्छे खासे पैसे नहीं दे रहा है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। में भी आप अच्छे खासे पैसे नहीं कमा पा रहे हो अपने जॉब से या अपने करियर में, वो चीज़ नहीं कमा पा रहे हो, एंड जिसकी वजह से मे बी एक समय पे इस चीज़ में आप इसलिए घुसे थे क्योंकि ये चीज़ आपको खुशी देती थी। बट देन यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि आप अच्छे खासे पैसे नहीं कमा पा रहे हो, आप इमोशनली भी एक अच्छी जगह पे नहीं हो विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। एंड देन उसके बाद जो कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। द 3 ऑफ कप्स यूजुअली नेटवर्किंग की बात करता है। मे बी इस दौरान पे आपको अपने कॉन्टैक्ट्स में, स्पेशली दोस्तों के साथ, इन द सेंस लाइक अगर आप एक नई अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो ये अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आएगी वो डेफिनेटली दोस्तों के थ्रू आएगी विद द 3 ऑफ कप्स। ओके, तो अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाइए। जिन लोगों से आपका घुलना मिलना है, नए लोगों से मिलिए, क्योंकि ये सारे लोग आपको ये जो नई शुरुआत जो आप चाहते हो आपके लाइफ में वो डेफिनेटली होगा विद द 3 ऑफ कप्स। हाँ, बट आपके कनेक्शन जो भी आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं विद द 3 ऑफ कप्स। सो उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है विद द 3 ऑफ कप्स। एंड ये चीज़ भी हो सकता है जहाँ पे आप एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जा रहे हो एंड सेंड ऑफ पार्टी हो रही है आपके लिए विद द 3 ऑफ कप्स, क्योंकि ये एक टाइप का लाइक सेलिब्रेशन की भी बात करता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। हर कार्ड एक्चुअली, हर कार्ड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है जहाँ पे कम्प्लीटली पॉजिटिव है। ओके, तो इस हिसाब से 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो ये दिखा रहा है कि हाँ, मतलब इस दौरान पे आपको बहुत संघर्ष से गुजरना पड़ रहा है पैसे कमाने के लिए। ओके, पैसे कमाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। मे बी बहुत थोड़े पैसे कमाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, वो चीज़ हो सकता है विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। बट इसका जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि लाइफ आपको ये चैलेंजेस इसलिए दे रहा है क्योंकि जब आपके हाथ में वो पैसे आए, जब आप वो उतने सक्सेसफुल हो जाओ, उतने पैसे, मतलब जितना पैसा चाहते हो, वेल्दी जब आप बनोगे, ओके, जब आप रिच इंसान बनोगे या सक्सेसफुल इंसान बनोगे, तो जब आपके पास वो पैसे होंगे, उस पैसों
की लाइक उन पैसों की अहमियत आपको पता रहेगी, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। बट हाँ, जो शुरुआती दौर होता है ऐसा होता है जहाँ पे इंसान बहुत संघर्ष करता है, चैलेंजेस फेस करता है, जहाँ पे वो अच्छे खासे पैसे नहीं कमा पा रहा है। बट देन क्योंकि आपने इतनी मेहनत की इतने थोड़े पैसों के लिए, तो जब आपको फाइनली वो पैसा मिलता है तो आप समझते हो उस पैसे की अहमियत। ओके, एंड सोच समझ के आप पैसे खर्च करोगे, भले ही आप कितने भी अमीर इंसान क्यों ना बन जाओ, आप सोच समझ के पैसे खर्च करोगे। तो वो लेसन आपको ये कार्ड सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इस दौरान पे मे बी अप्रैल के महीने में आप सीख रहे हो ये सारी चीज़ें, जहाँ पे आप वो सीख रहे हो कि पैसे की अहमियत क्या होती है। तो वो आप जब सीख लोगे तो आप ये चीज़ देखोगे कि डेफिनेटली पैसे आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे। ओके, सो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स चैलेंजेस की बात करता है, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई इट, चैलेंजेस की बात करता है, तकलीफ़ों की बात करता है। बट जब आप ये लाइक प्रैक्टिकल होने लग जाओगे अपने करियर में, प्रैक्टिकल तरीके से अपने करियर को हैंडल करने लग जाओगे, तब आपको लाइक वो समझ आएगी कि ओके ये क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है, आप काफ़ी टाइप के बहुत फेयर टाइप के लोग हैं। ऐसा नहीं कि लोगों का सॉरी आप लोग ऐसे लोग नहीं हो जो लोगों का फ़ायदा उठाते हो। ओके, विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द टू ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे हर किसी का भला चाहते हैं। द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स भी हर किसी का भला चाहते हैं। एक्चुअली आप लोग ना सोसाइटी के लिए अगर काम करोगे तो बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि आप लोग बहुत फेयर और जस्ट टाइप के लोग हो। किसी का लाइक ऐसा नहीं है कि गरीब गरीब ही रहे और अमीर अमीर ही रहे, आप चाहते हो कि सब इक्वल टाइप के रहे। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। आप बहुत गिविंग हो सकते हो नेचर में, एंड क्योंकि आप गलत तरीका नहीं इस्तेमाल करना चाहते हो पैसे कमाने का, तो इस हिसाब से बहुत फ्री आइदर आप बहुत दान देते होगे, वो चीज़ हो सकता है, या जस्ट द फैक्ट दैट आप कभी भी गलत तरीके से पैसे नहीं कमाना चाहते हो, एंड वो चीज़ सही है। ओके, आई एम नॉट सेइंग वो चीज़ गलत है, वो चीज़ सही है। आपके मॉरल्स एंड स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके, बट ये समझ के चलिए कि जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, ये चैलेंजेस इसलिए है ताकि आप पैसे की अहमियत समझें। एंड टू ऑफ पेंटिकल्स ये चीज़ हो सकता है अप्रैल के महीने में आप दो चीज़ें जगल कर रहे हो, दो चीज़ें एक साथ कर रहे हो, वो चीज़ हो सकता है ताकि आपको फिनांसेस में जो कमी है, पैसों की जो कमी है, उस चीज़ को किसी न किसी तरीके से बैलेंस आउट करने के लिए आप दो चीज़ें एक साथ कर रहे हो विद द टू ऑफ पेंटिकल्स, वो चीज़ हो सकता है। बट जैसे एक इंसान अगर बहुत सारे चैलेंजेस से गो थ्रू करते हैं तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव होता है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ नेगेटिव है। तो इस हिसाब से जो आउटकम कार्ड है विद द सन कार्ड, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि डेफिनेटली आप किसी चीज़ में काफ़ी सक्सेसफुल होने वाले हो, इन द सेंस लाइक आपको आइदर स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस होगा या लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। एक नई शुरुआत, एक सॉलिड नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होने वाली है अपने करियर के साथ, जहाँ पे आपको खुशी, अंदरूनी खुशी, क्योंकि ये खुशियों की भी बात करता है सन, सक्सेस खुशियों की बात करता है। थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि मे बी अगर ये चैलेंजेस आप नहीं फेस कर रहे तो ये आपके फादर फेस कर रहे होंगे, वो चीज़ हो सकता है विद द सन कार्ड एंड विद ऑल द अदर कार्ड्स। मुझे लगता है आपके फादर कोई फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है विद द सन कार्ड। ओके, बट जैसे मैंने कहा कि अगर देखा जाए तो यूजुअली सन कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड है। ओके, तो थोड़े लोग कुछ नया सीख सकते हैं, जो नया आप सीख रहे हो उसी चीज़ में आपको वो सफलता मिली जो आप चाहते हो। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है क्लीन इट अप एनर्जी। तो क्लीन इट अप एनर्जी ये दिखाता है कि आपने संघर्ष किया है, संघर्ष आप कर रहे हो, बट क्लीन इट अप एनर्जी कहता है ये जो नेगेटिविटी है आपको निकालना है, मेरी चीज़ों को एक अलग तरीके से देखने की ज़रूरत है। एंड देन इस जो भी लेसन्स आप सीख रहे हो, ओके, उससे सीखिए, क्योंकि ये जो लेसन्स हैं वो आपको आपके फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, ताकि जो गलतियां आप अभी कर रहे हो फ्यूचर में ना करें, एंड जिस तरीके से आप पैसों को समझोगे, मे बी आपका समझने का तरीका अलग हो जाएगा, वो चीज़ है। बट ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव आने वाला है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, भले ही नेगेटिविटी है, बट आई डेफिनेटली सी समथिंग पॉजिटिव हैपनिंग इन द अप्रैल मंथ। ओके, सो ये भी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।
जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके करियर में अप्रैल में चीज़ें कैसी रहने वाली हैं। ओके, आपका जो पहला कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। तो 4 ऑफ कप्स इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपके करियर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल रही हैं, बट आपको लगता है ये जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं वो आपके स्टैंडर्ड की नहीं है, आप इन अपॉर्चुनिटीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड नहीं हो। ओके, और इस दौरान पे इमोशनली बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आप काफ़ी मूडी भी फील कर सकते हो। ओके, कुछ कुछ किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा है, उस टाइप की एनर्जी है 4 ऑफ कप्स की। ओके, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये चीज़ हो रहा है कि सफलता तो आपको मिल रही है, करियर में एक्चुअली अच्छा कर रहे हो। अप्रैल के महीने में मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि स्पॉटलाइट आपके ऊपर होगा। बहुत सारे लोग इन द सेंस सक्सेस की बात करता है स्टार कार्ड। ओके, मे भी आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, वो चीज़ है, लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं, किसी न किसी टाइप का अवार्ड या रिकग्निशन आपको मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं अंदर से खुशी नहीं है। विद द 4 ऑफ कप्स यू आर नॉट हैप्पी। ओके, एंड ये चीज़ दिखाई दे रही है कि जहाँ पे आप हैप्पी नहीं हो। एंड इस दौरान भी अप्रैल के महीने में ये चीज़ देख रही हूँ कि जो आपके आइडियाज़ होंगे काफ़ी रेवोल्यूशनरी हो सकते हैं या बहुत अच्छे आइडियाज़ हो सकते हैं, एंड थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पेज ऑफ स्पॉट्स ये कहता है कि अपने आइडियाज़ को दूसरों के साथ शेयर ना करें, अपने काम को दूसरों के साथ शेयर ना करें, क्योंकि आपके काम को कोई लेके अपना बना के दूसरों को दिखा सकता है। आपके आइडियाज़ आपके होंगे पर कोई और ये बताएगा कि ये मेरे आइडियाज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक कॉपीराइट इश्यूज़, प्लेजरिज्म, सो ये सारी चीज़ों की भी बात करता है। तो इस हिसाब से थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है विद द स्टार कार्ड एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। जो आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं, मैं डेफिनेटली कहूँगी लोगों के साथ शेयर ना करें। ओके, वो चीज़ है, बट जो आइडियाज़ हैं ये ज़रूरी नहीं है कि फीसिबल हो, इन द सेंस रियलिटी में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं हो सकता है, वो चीज़ है, मेहनत करनी पड़ेगी। बट मैं यही चीज़ देख रही हूँ कि आप काफ़ी अपने काम में सक्सेसफुल हो रहे हो, पैसे अच्छे खासे हैं, एवरीथिंग इज़ गुड, बट देन आप खुश नहीं हो। ओके, 4 ऑफ कप्स, खुशी नहीं है, कमी है। ओके, कमी है किसी चीज़ की। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स एक्चुअली खुशियों की बात करता है, बीइंग सैटिस्फाइड, ये सारी चीज़ें। एंड 4 ऑफ कप्स जैसे मैंने कहा क्योंकि वाटर की एनर्जी है, तो इस हिसाब से जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि विद द 4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स आप काफ़ी मूडी हो सकते हो। एक मिनट बहुत अच्छा फील कर रहे हो, नेक्स्ट मोमेंट रियली डाउन एंड ऑल दैट स्टफ, नेगेटिव, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट बहुत हद तक क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है मुझे। सो यू डोंट हैव टू वरी। थोड़े लोगों के लिए ये है कि अगर आप सोच रहे थे फॉरेन में जाके पढ़ाई लिखाई करने का, एंड आपका कुछ वीज़ा का चक्कर या कुछ भी ऐसा कुछ चल रहा था पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से, तो मैं ये डेफिनेटली देख रही हूँ कि चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं कि आपका देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आप विदेश जाके पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 9 ऑफ कप्स है, हर्मिट कार्ड है। उसके बाद जो कार्ड है वो है हायरोफेंट कार्ड। तो एक जो चीज़ है यहाँ पे इस दौरान पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो, अपने आप से बड़े सवाल पूछ रहे हो कि लाइफ के बारे में, इन द सेंस आप ना दुनिया को इम्पैक्ट करना चाहते हो, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो, पर आपका काम आपको करने नहीं दे रहा, वो चीज़ हो सकता है। मे बी आप बहुत क्रिएटिव हो, पर ये क्रिएटिविटी आप अपने काम में नहीं लेके आ पा रहे हो, जिसकी वजह से आप नाखुश हो, वो चीज़ भी हो सकती हैं। एंड जैसे मैंने कहा, अगर फॉरेन स्टडीज़ के लिए आप दूसरे देश में आप फॉरेन कंट्रीज़ में स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो आई डेफिनेटली सी कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि हर्मिट है, हायरोफेंट है। तो यहाँ पे जैसी कहावत है कि जब when the student is ready the teacher appears, तो जब एक स्टूडेंट तैयार है तो टीचर खुद ब खुद आ जाता है। तो उस टाइप का कुछ सिनेरियो बन रहा है आपके लाइफ में, जहाँ पे मे बी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस होने वाले हैं। बट ओवरऑल जो अगर मैं देखूँ तो करियर के हिसाब से आप डेफिनेटली सक्सेसफुल रहोगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। हायरोफेंट टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की बात करता है, टीचर भी आप हो सकते हो, वो चीज़ भी है। एंड ऑल दैट ग्लिटर्स एक ऐसा टाइप का कार्ड है जहाँ पे हाँ पैसे तो हैं, सब कुछ अच्छा है, बट ना कुछ मिसिंग है। आप
वो ट्रांजिटरी या दिखावे से दूर हट रहे हो अभी इस दौरान पे। मतलब आप चीज़ें दिखाने के लिए नहीं करना चाहते, किसी पोजीशन में दिखावे के लिए नहीं जाना चाहते, बस आपको अंदरूनी खुशी चाहिए। ओके, एंड वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी अप्रैल के महीने में। वो चीज़ मैं आपके लिए डेफिनेटली देख रही हूँ। ओके, एंड कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप लेने वाले हो, वो चीज़ है। बट या अपनी मूडीनेस को थोड़ा कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। बट जब आपको पता रहता है कि हाँ आप थोड़ा मूडी रहोगे, लोगों से अफेक्ट होगे, तो इस हिसाब से मैं डेफिनेटली ये कहूँगी कि थोड़ा जब आपको पता रहता है तो आपको अपने आप से लाइक इमिडिएटली जब आप बहुत इरिटेबल हो रहे हो या इरिटेट हो रहे हो लोगों से, तो आप अपने आप को समझाने की कोशिश करें। इट्स ओनली बिकॉज थोड़े समय के लिए ये सारी चीज़ें। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि अप्रैल के महीने में चीज़ें आपके लिए कैसी रहने वाली हैं करियर के हिसाब से। जो आपका पहला कार्ड है वो है चैरियट। तो चैरियट एक्चुअली एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है जो बताता है कि आपको करियर में अप्रैल के महीने में सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है चैरियट। एंड चैरियट अगर देखा जाए तो ये इंसान को परख है, इनके लिए क्या सही है क्या गलत है, उस टाइप की चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा एक स्लो मूविंग कार्ड है क्योंकि यहाँ पे जो स्पिंक्स हैं, जो जानवर है, ऐसा लगते हैं कि बैठे हुए हैं। तो इस हिसाब से इंसान तो रेडी है कि हाँ बैटल करना है, किसी चीज़ को अचीव करना है, उस चीज़ के लिए रेडी है, पर अपोजिंग फोर्सेस के साथ काम करना पड़ रहा है। मतलब ऐसा चीज़ हो सकता है कि लोगों को साथ लेके आगे बढ़ना पड़ रहा है। एंड हर टाइम जब आप टीम में काम करते हो तो ऐसा होता नहीं है कि सब एक साथ मिलके काम करते हैं। ऐसा होता है कि एक इंसान बहुत काम करता है, दूसरे कोई काम नहीं करता है। तो ये थोड़े चैलेंजेस हैं, बट इंसान आगे बढ़ता है। चैरियट कार्ड आपको डेफिनेटली ये कहता है कि अपनी जो नज़र है अपने गोल पे रखें। ओके, उस घोड़े की तरह रहिए जो अगर आप देखते हो घोड़ा अगर रोड पे चल रहा हो तो साइड में उसके ब्लाइंडर्स होते हैं। ओके, साइड में ऐसा लाइक ताकि वो इधर उधर ना देख पाए एंड बस आगे देख पाए। तो इस दौरान पे ये चीज़ हो सकता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों से अफेक्ट हो रहे हो। एंड ये कार्ड आपको कहता है कि अपनी नज़र ना प्राइस के ऊपर रखें, अपनी नज़र अपने गोल के ऊपर रखें एंड उसी की तरफ आगे बढ़ते रहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगा विद द चैरियट कार्ड। एंड यूजुअली चैरियट एक्चुअली प्रमोशन की बात करता है, ये लाइफ में आगे करियर में ऊपर बढ़ने की बात करता है। तो उस हिसाब से पॉजिटिव कार्ड है। उसके बाद जो कार्ड है वो है टावर। तो ये चीज़ थोड़ा सरप्राइजिंग है कि चैरियट के बाद टावर आया है। तो यूजुअली टावर क्या है, इंटरनल थिंग नहीं है। ये नहीं है कि इंसान के अंदर कुछ हो रहा है, उस टाइप की एनर्जी नहीं है चैरियट की, सॉरी टावर की जो एनर्जी है वो बाहर, मतलब चीज़ें आपकी इर्द गिर्द ऐसी हो रही हैं जो आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं। ओके, तो मे बी ये चीज़ हो सकता है कि सडनली किसी ने जॉब छोड़ा। ओके, और वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट की इन द सेंस लाइक किसी ने डिसाइड किया एंड इट केम एज अ सरप्राइज़। ये काफ़ी सरप्राइजिंग था कि इस इंसान ने जॉब छोड़ दिया। तो वो चीज़ हो सकता है विद द टावर कार्ड। बट डेफिनेटली आपके करियर में, आपके इर्द गिर्द, आपके ऑफिस में ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है विच विल कम एज अ सरप्राइज। ओके, विद द टावर कार्ड तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स अगर देखा जाए तो एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे चीज़ें थोड़ी स्लो डाउन हो जाएंगी, थिंग्स थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा अप्रैल के महीने में। मे बी आप बहुत अच्छा कर रहे थे एंड देन सडनली इट इज़ लाइक बहुत चीज़ें थोड़ी स्लो हो रही हैं। ओके, विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड ये भी कहता है कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स मे बी आप छुट्टी लोगे, वो चीज़ भी हो सकता है अप्रैल के महीने में कि ऑल ऑफ अ सडन आपको छुट्टी लेना पड़े विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी कहता है आपको कि बहुत ध्यान दीजिए अपने हेल्थ के ऊपर। ओके, अपने आप को इतना पुश ना करें कि अपने हेल्थ का ही ध्यान ना दें। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि थोड़ा हेल्थ का ध्यान दें। ओके, रेस्ट लीजिए, छुट्टी लेके रेस्ट लीजिए। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है फूल कार्ड। उसके बाद जो छुट्टी के बाद या समय जब स्लो डाउन होने के बाद जो समय आएगा आपके लिए, चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। ये चीज़ इसलिए है क्योंकि फूल कार्ड ना काफ़ी एंथुजियास्टिक, मतलब जो काम करना चाहते हैं उसकी तरफ काफ़ी उनकी
उनमें जज्बा होता है कि हाँ मुझे ये करना है, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। तो उस टाइप का कार्ड है फूल कार्ड। तो फूल कार्ड एक्चुअली एक नई शुरुआत की बात करता है, जहाँ पे एक इंसान ना लाइक ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं एंड डायरेक्टली कूद जाते हैं, बात का बात सोचा जाएगा पहले कर लेते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी है फूल कार्ड की। एंड फूल कार्ड एक ऐसी एनर्जी है जो 9 to 5 जॉब्स को नहीं, लाइक इट इज़ नॉट अ 9 to 5 जॉब, ओके। ये फ्रीलांसिंग वर्क की बात करता है, घर बैठे कुछ काम करना, ये सारी चीज़ों की बात करता है। तो 9 to 5 जॉब नहीं है फूल कार्ड का, ओके। एंड मे बी आप ऑलरेडी सोच रहे हो कि मे बी आपको ये चीज़ करनी चाहिए जो आपको खुशी देती है। एंड ये क्रिएटिव वर्क हो सकता है विद द फूल कार्ड एंड विद द 6 of कप्स। एंड जो भी ये सिचुएशन है, जो भी आपके इर्द गिर्द जो टावर का सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन से उभर पाओगे, सिचुएशन से निकल पाओगे, क्योंकि आपके पास 6 of कप्स है। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। एंड थोड़े लोगों के लिए डेफिनेटली है कि आप एक कुछ क्रिएटिव काम शुरू करने वाले हो, जिसके वजह से यू नो लाइक आपको वो खुशी मिलने वाली है। मे बी ये बहुत समय जब आप छोटे थे आपको ये पसंद था करना, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आप फिर से करने लगोगे, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपको जॉब मिलेगी, ओके। मे बी थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि आप सोच रहे हो ये जॉब छोड़ के किसी और जॉब में घुसने का। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि डेफिनेटली चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि आपको सफलता मिलेगी नए जॉब में, या अगर आप जॉब चाहते हो तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है जो कहता है कि आपको जॉब मिलेगा, ओके। उसके बाद जो कार्ड है एम्परर कार्ड। तो इस हिसाब से क्योंकि आपके पास एम्परर है, आपके पास चैरियट कार्ड है, ये दोनों ही प्रोफेशनल सक्सेस के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो इस हिसाब से डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आपको अपने करियर में प्रमोशन मिलने वाला है, करियर में सफलता मिलने वाली है डेफिनेटली अप्रैल के महीने में। आई सी यू गेटिंग प्रमोटेड, दैट इज़ व्हाट आई सी। मे बी इट कैन बी सडन, ये जो प्रमोशन है सडन है। मे बी आपके मैनेजर ने ऑल ऑफ सडन डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे जॉब छोड़ना है, एंड देन कोई है नहीं, एंड देन इट्स लाइक ओके आपको उस पोजीशन में बैठा दिया। तो वो चीज़ हो सकता है जहाँ पे लाइक सडनली अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि टावर सडन चीज़ों की बात करता है, किसी और के कहने पे ये चीज़ हुआ, किसी और के लाइक इट्स ऑल अबाउट एक्सटर्नल। जैसे मैंने कहा टावर इंटरनल नहीं है, टावर एक्सटर्नल है, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है पीस का। थोड़ा अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। मे बी आप अपने आप को बहुत पुश कर रहे हो, मे बी आपको ट्रैवलिंग का मौका मिल सकता है, क्योंकि फूल कार्ड है एंड देन यहाँ पे पीस कार्ड है, तो ट्रैवलिंग का मौका मिल सकता है, वो चीज़ है। हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद है फोक इन द रोड। फोक इन द रोड कहता है आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ओके। मे बी थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि आप यू नो लाइक ऑलरेडी सोच रहे हो अपना जॉब छोड़ने का एंड कुछ नया शुरू करने का, वो सोच रहे हो आप, एंड कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आप नया शुरू करने वाले हो अप्रैल के महीने में, वो श्योर है कि आप कुछ नया शुरू करोगे, क्योंकि फ्लेक्सिबल कार्ड है। उसके बाद है लेग अप। लेग अप कहता है कि मे बी आपके काम के क्षेत्र में एक आप ही हो जो काम करते रहते हो और दूसरे सारे इतना काम नहीं करते, तो वो चीज़ हो सकता है जहाँ पे काम ना इक्वली डिवाइडेड नहीं है, तो वो टाइप का कार्ड है लेगा। उसके बाद है यांग कार्ड। यांग कार्ड आपको कहता है यू नो एक नई शुरुआत में देख रही हूँ, क्योंकि आपके पास 3 कार्ड्स है जो ये बता रहे हैं कि एक नई शुरुआत है। आपके पास फूल है, यांग है, फ्लेक्सिबल कार्ड है। तो ये तीनों ही कार्ड्स बताते हैं कि नई शुरुआत हो रही है अपने करियर में, कुछ अपना खुद का कुछ आप शुरू कर रहे हो, क्योंकि यू डू हैव द एम्परर कार्ड। एम्परर कहता है कि अपना खुद का बिजनेस चाहिए, क्योंकि वो किसी और के अंडर काम नहीं कर सकते। तो उस टाइप की एनर्जी है, आइदर प्रमोशन, या थोड़े लोगों के लिए प्रमोशन है एंड थोड़े लोग के लिए डेफिनेटली यू स्टार्टिंग समथिंग न्यू, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। Welcome to Magic Tarot. So this is another pick a card for you all. The question is, how's your career going to be in the April month? You have 3 options in front of you. The first option is amethyst. The second option is the pink flower. The third option is peacock feather. So timestamps will be provided in the description box. You can click on your timestamps. You can click on the timestamps and watch your reading. So let's proceed with the reading. The ones who chose an option 1. So let's look at your cards, what your cards are telling me. How's your career going to be in the month of April? Okay, so you have the first card, death, which is talking about a transformation. Either you're planning to change
your career, okay, going through a transition in your life in terms of your career, or wanting to just jump from one field to another field, that is death, or learning something new which is very much different from what you have been doing all this while. So death actually talks about change in career. Okay, so if you're looking forward to this, then this is a positive card for you, and if you're not looking for it, then definitely you're going through a phase where you kind of like understanding that you want to change, you want a big change in your life. Okay, so a big change is coming in your career. That is what I see for you with the death card. Maybe this change is coming about for a reason that with the Five of Pentacles you feel like you're not able to earn enough money to sustain your livelihood, or it can be just the fact that you feel like this particular job does not really pay you well, with the Five of Pentacles and with the death card. Okay, so maybe you want a change in career for a reason that you are for a reason that you want to earn more money. Okay, because this is not really satisfying you financially. Maybe emotion, after a point of time, I feel like maybe you got into this job because you had emotional satisfaction, but when you kind of like understood that you don't really have enough money, or you're not able to make enough money, somewhere this is weighing down on you, and emotionally as well you're not in a good place right now in terms of your career. That is what I see for you. But then the death card actually can come about as something which is very positive, in the sense that you can have a new beginning, a new rise, okay, in your career. That is what I see for you with the death card. Okay, because you do have the sun here. You look at the flag, and then behind you have the horse, and look at the mountains there. It looks like a tower. Yeah, it is tower, and then you have the sun which is rising. So you've gone through, usually the tower talks about something which shakes up your world in a way that does not always has to be negative, but it can be positive in a sense that it wakes you up. Okay, it wakes you up to the challenges that you've been facing. Okay, something which kind of changes your perspective as well. So behind the tower you have the sun rising. So now it seems like you have things are going to change in the April month for you. Then you have the Three of Cups. So there's some sort of celebration. There's heartbreak as well, like maybe you're going to leave the company and then join another company. It can be that as well, where it's a send-off party for you with the Three of Cups. It can be that you're leaving your old friends behind and then moving on to something new. Okay, then you have the Three of Swords, which always usually does talk about some hard lessons that you've learned, but the Three of Swords can come as quite positive, in the sense that actually, okay, so I'm going to tell something negative and then something positive. So the Three of Swords actually does talk about not earning enough money. Okay, that is the Three of Swords. But then at one point of time, you're going to have good amount of money. The Three of Swords is making you, making you realize, or making you understand the value of money. It's putting in, life is throwing all of these challenges for a reason, that it wants you to understand the value of money. Because once you have the money that you desire, once you become rich in life, you need to know that at one point of time you were struggling to make this money. So you kind of understand the value of, so you kind of understand the value of this money that would actually come into your life later in life. But yeah, you have challenges that you're going to face, and don't be disheartened. Just learn through these challenges. That is what I'm going to tell you with the Three of Swords. It's telling you to learn from them and know that at one point of time you're going to be quite successful. That is what the Three of Swords talks about in terms of money. And the other thing about the Three of Swords is that you can be someone who is not like greedy. Okay, not like really greedy or just after money, but you can be someone who thinks of other people as well, like on a collective sense. You look at other people as well. You make sure that
it's like everybody has enough. You don't want to have that disparity, that poor and then rich. You want everyone to be equal. So that can be the three of swords, where you look, you know, you really want to work for the people. That can be that with the three of swords. And then you have the two of pentacles. You can be very giving in nature. Your nature is such that you can be very giving in nature. You're not someone who takes okay, you're basically not a person who's going to use wrong means to earn money. Okay, so you're that kind of a person, because of which, you know, like oftentimes in trade you have to take a wrong route, or you know, even to make money sometimes you have to lie. Okay, maybe the pricing, in the sense like to earn more profits, you have to sell it at a higher price, but you're someone who's like, who is really just, and who is a kind of person who does not want to do any of these. And I would definitely suggest to you that you should be working for the society, because you're going to do so much more for the society than anybody else. Okay, because you do have the three of swords and the two of pentacles, which kind of suggests that kind of energy. Okay, and then maybe at this point of time you're juggling two things in terms of your finances, because you want to meet up those finances. I definitely see that you're struggling with your finances, whoever has chosen this particular pile. But you know, after everything that we go through, some difficult times, there's always a new start, there's always something new. Like you know, there's always going to be something positive that is going to happen in your life. So if you're struggling through this, know that you know, better days are coming for you with the sun card, because the sun kind of represents success. It kind of represents recognition and wanting what you and wanting whatever you want, you're going to get that with the sun card. So the sun card is definitely, maybe your father, maybe your father is having financial issues, it can be that as well. Okay, so that can be with the sun card. Okay, but yeah, it does talk about success, but like I said, you should be working for the society, and whatever change that is coming into your life, embrace that change. You know, like embrace that change. That is what I'm going to say, because it's going to bring in a lot of positivity into your life. And then you have clean it up energy. So the clean it up shows that you've gone through some real big challenges in your life, in terms of maybe finances, in terms of your career, and now is the time to get rid of that negative energy. And all of these, just take it as something like, you know, and take it as a learning experience, so that you don't make the same mistakes down the line. Okay, but I definitely see you being financially good enough. Okay, because you do have the three of swords, which talks about, yeah, I'm going to throw challenges your way, so that you understand the value of money, and later on in life I'm going to give you what you deserve. But even at that point of time, you're going to know, okay, you're going to curb your expenses in such a way that you know what is the value of money. Maybe just to earn a certain small, maybe just to earn a meager amount of money, you had to like really struggle. And then when you get that amount, when you get wealth, you will know and you will understand the value of money. So that is what it is. Right now you're going through some challenges, and I would definitely suggest to you, take this up as something which is preparing you for the future. Okay, that is what I'm going to tell you. Okay, and with the two of pentacles, maybe you're juggling two things, and maybe that is what you need to do at this particular moment, so you kind of understand that you need to make a new start. Okay, but yeah, there's something positive which is going to happen in the April month. That is what I see for you with the sun card. Okay, you're going to get something, maybe it's an illumination, understanding, wanting to learn something new. It can be something completely new, and then being immersed in that. But yeah, whatever that you're going to be doing, something positive is going to come out of it. So it's not going to be all negative. Okay, so do not worry about it. Yeah, that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. The ones who chosen option 2, so let's look at your cards, what your cards are telling me. In April month, how's your career going to be? Okay, so the first card that you have here is the Four of Cups. So in terms of Four of Cups, what does it talk about? It tells you that opportunities are lining up for you. You are definitely getting offers, but you seem to be uninterested. Okay, usually the Four of Cups talks about wanting distance from things, feeling bored, feeling uninterested, and more importantly, it just seems like, you know, staying away from things, because there's something on an emotional level, you're going through something in terms of career. Maybe people are talking about you. It can be that with the Four of Cups as well, like
maybe you're reading too much into people's actions and words and all that stuff, like why did they say it this way and why do they have to do it this way. So something like that, it can be very minute, very silly, or not something that you should be giving importance to. So it can be that with the Four of Cups. The next card that you have is the Star card. So I also feel like you are being recognized. You are, people. It can be that your work is being recognized. Your manager or whoever that you're working for, there's some form of success that you're getting. You are in the limelight in April month in terms of your career, but then there is something on an emotional level that something has happened, something, maybe people are talking. That is what I feel like. People are talking, and maybe they're spreading rumors about you. It can be that. I'm not trying to scare you, but there is something like that happening. Okay, and with the Star card, people are recognizing your talent. You are going to be in the spotlight for something, and yeah, and maybe you don't want to be in the spotlight. What exactly it is with the Star card? Okay, then you have the Page of Swords. The Page of Swords, if you have ideas coming into your mind, okay, you during this point of time you're going to have a lot of ideas. Maybe they're not exactly feasible, but definitely futuristic ideas or something which can revolutionize, change things. Okay, some great ideas you can have, and I would definitely suggest not to tell anyone about your ideas, no matter how crazy they may sound, or if it is actually feasible. I would definitely suggest do not open up about your ideas to other people. Chances are they might try to take away your ideas and present them as their own. Okay, so you can have plagiarism or copyright issues, something like that with the Page of Swords. So you need to be very careful of your work, protect your work. Your work might be taken by others and showed as if it is your own. So you need to be careful about that with the Page of Swords and with the Four of Cups. So be careful about that. Okay, the next card that you have is the Nine of Cups. So the Nine of Cups usually is a positive card, being happy, being satisfied. I feel like you're going to, in the April month, in terms of your career, you're feeling a little moody. Okay, like some extreme emotions. It can be like happy at one moment and the sad the next moment. Your emotions are changing drastically. Okay, like there's something going on emotionally. That is what I feel. And I also have a feeling that what really is happening is you're getting recognized for what you do. Maybe you're earning good amount of money, but then something is missing. You have this feeling like something is missing with the Hermit card. All of a sudden you're starting to question a lot of things, getting serious about life. You can become very you're paying a lot of attention to details. That is what is happening with the Hermit and with the Four of Cups. Small things are like really affecting you, and you need to kind of understand that maybe you're going through these mood swings, or maybe you're going through whatever that you're going through is just for a short period of time, and you shouldn't be paying that close attention to all the things that's happening. And with the Hermit card, you're questioning a lot of things, like wanting to understand life, like seriousness of life, like why are you here, and like some really it can be that maybe you're regretting your past. It can be that maybe in past certain things have happened. You're like trying to understand that. You can be futuristic as well with the Hermit card, like wanting to look ahead but then learning from your past. That is the Hermit card. But yeah, there's a lot of mood swings that's going on. But yeah, what I see for you is the fact that you're getting recognized. Things are going really well, but on an emotional level there's a lot that's going on. And then you have the Hierophant card. I feel like if you kind of like with the Hierophant card, if you listen to someone, okay, if you get an advice from someone that you respect or someone that you think highly of, okay, even listening to some spiritual talk can really help you out with the Hierophant card. It actually talks about a teacher and a student. So maybe right now, because it can happen that
you're ready to learn something, okay, in terms of your career, and the teacher is going to appear, because you do have the Hermit and the Hierophant. The Hermit usually kind of talks about like higher studies because it's associated with number 9, traveling and all that stuff, and you have the Hierophant, teacher student relationship. So it can be that maybe you want to study abroad, and then you're getting this opportunity to study abroad. Maybe your visa or whatever that you were waiting for is finally like going to give way. That is what I see with the Hierophant and with the Hermit card. Okay, you're going to be quite satisfied and happy about it. But like I said, there's a lot of strong mood swings that's going on. But in terms of career, things are going good actually, and all that glitters. You feel like all of this that you're going through, it's all transitory, like it just, I think you're becoming spiritually very aware of things around you, okay, and with all that glitters, it's kind of like money is not going to make me happy. Like that is what you feel with all that glitters. There's something that you need to dig deep, okay, and the answers are within you actually. But nothing is making you happy at this point of time. Like, I'm sorry to say that, but I see you growing, like becoming quite successful in your career, but then you're not happy with it, and I don't know why. Maybe it's because you want to impact the world, you want to make a difference in the world, and your actions are not, your job is not allowing you to do that. You want to be very creative. Maybe your job is not allowing you to do that, and you're starting to question all of these things. Yeah, it's something like that, okay? So yeah, that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. The ones who chosen option 3, so let's look at your cards, what your cards are telling me. Like, how's your career going to be in the month of April? Okay, so the first card that you have here is the Chariot card. So the Chariot is quite a positive card, which talks about the fact that during this point of time, in the month of April, it's telling you to keep your eyes on the prize. Okay, so if you have any goal to accomplish, keep your focus on the goal and keep moving forward, and do not be distracted by what's going on around you, okay, especially in terms of like, maybe it can happen that people around you, okay, maybe you're paying too much attention to the people around you, and with the Chariot card is telling you to have a posture or a behavior like a horse, okay, just look forward and move towards that and not be distracted by the other things. So that is the Chariot. Keep your eyes on the prize. And usually the Chariot talks about professional success. It talks about climbing up the ladder of life. Okay, so that is quite positive. And I think you kind of understand what is right for you, what is wrong for you, because it's the number 7. Being driven by emotions is going to really propel you forward. So use your emotions for your benefit. Let it act for you and not against you, in the sense like it should help you it should help you to move forward in life, to accomplish your goals, rather than to bring you down. So you need to be careful on that aspect with the Chariot card. Okay, so that is the Chariot, and the next card that you have is the Tower. Okay, that came as a surprise to me. So I feel like with the tower card, what really is going to happen is there's something in your environment that is going to take place which can come as a surprise, because the tower is not an internal thing, the tower is external. Because the tower is external, it's like breaking news to me. Okay, with the tower, something like maybe someone is going to put down papers and that is going to come as a surprise to you. It can be that with the Tower card. And the fact that with the Tower, what really happens is, like I said, it's an external circumstances. It's not your own doing. It's from outside. So there is something going on in your environment which can affect you. I'm not telling you this is not going to affect you. This is going to affect you. And with the Chariot, like I told you, you need to be like the horse. Like, keep your eyes on the prize. Okay, have those blinders.
okay? And make sure that you're just moving towards your target rather than looking around you and being distracted by all of these negative energy. So there is something which can come as a surprise. And the next thing is this can slow things down with the Four of Swords. The Four of Swords is about taking rest. It's about, going on a leave. It can be that as well, like you probably would feel like you have to go on a leave. It can be that with the Four of Swords and taking rest. Okay, so here what I feel like, things are going to slow down a bit, and it is telling you to take care of your health as well. In terms of your career, maybe you're pushing yourself way too hard in terms of career. It can be that with the Four of Swords. And the next card that you have here is the Fool card. So what really happens is, after this rest, after things have slowed down, it's going to pick up. You're going to feel emotionally energized, and more importantly, with the Fool card, you're going to be very enthusiastic about work. Okay, enthusiastic about what you really do. And during this point of time, you can be doing something you can end up doing something which is creative. It can be a new endeavor of yours, something that you used to enjoy when you were a kid, and then all of a sudden you feel you have this desire to again restart the practice of doing something that you used to enjoy previously. Or it just can be that something which is not a 9 to 5 job. Okay, the Fool is not a 9 to 5 job. The Fool usually talks about freelancing work. Okay, something that you do at your own time. Okay, you're just happy about it, and you do it because you are happy about it. So that is the Fool card. And then you have the Six of Cups, which talks about things coming back from the past. So maybe this was one of your hobbies that you really kind of like left it, and then you like restarting it. It can be that as well. And the other thing about is anything that is going to affect you, okay, maybe the external circumstance or whatever it is, you're going to bounce back from that. So do not worry about it, because you do have the Six of Cups. The next card that you have is the Knight of Pentacles. So if you're looking for a job, this is the card for you. The Knight of Pentacles definitely does suggest that you're going to get a job. Okay, and if you're wanting to change jobs, good thing with the Knight of Pentacles. And the next card that you have here is the Emperor, which talks about promotion. Okay, so you have like two beautiful cards in terms of career, which definitely suggests that you're going to have a promotion. You're going to move up the ladder. That is what I see for you, okay, with the Emperor card. And for a few, it's like, you are like starting a new business of yourself, like starting a new business, and that's going to like pick up, and you're going to be quite happy about it. You're going to earn money through that. That is what it's talking about. And then you have the Peace card, which is again telling you take care of your health. Okay, maybe you're going to get an opportunity to travel. That is also the thing. And then you have time for a nap. And the Four of Swords is the same card for me. So again telling you, make sure that you're not pushing yourself too hard. And then you have Flexible cards, starting something new. That is what I see. Maybe you have to take a decision in terms of that, like maybe you're thinking of leaving one job and then moving to another job. It can be that as well. And then maybe you've been pushing yourself, like all the work, it is always you who's doing all the work, and the others are like never doing it. Maybe you're someone who's very hardworking in nature with a leg up. And then Yang card, I definitely see you starting something new in the month of April. To a great extent, I see you starting something new. And for the other half, it is definitely promotion coming up for you. That is what I see. Okay, so that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you.